इसमें अभी एकांतिकता नहीं में क्या है अभी The Hindi is already live in the class, आश्रम in the धर्म room. But I think they will translate from there. Oh my God. Let me check. किंतु भगवान विष्णु के पूर्ण रूप से भजन नहीं कर रहे हैं. But they're not doing Bhagavan. They're not one pointed. उसी प्रकार है तो पौराणिष्ठ में क्या रखते हैं? What is the Paranishta? भगवान विष्णु की पूजा आदि करते हैं किंतु अभी तक they do puja of Bhagavan Krishna but not complete. I was not even going to translate that. तो दोनों में अंतर क्या है? So what is the difference between both? में रहता है कुछ देव देवी की भी पूजा भी कर लेते हैं भगवान की पूजा कर लेते हैं. So the Sanishta, they are mixed. They are worshipping God and also demigods. पौराणिष्ठ में कहा जाता है and in Paranishta they have Nishta in Bhagavan देव देवी की पूजा आदि नहीं करते. But ये हो गया. किंतु अभी कृष्ण में पूर्णता एकनिष्ठता नहीं. They are not one pointed to Krishna. दिखा रहे हैं. And the Nirapeksha एकमात्र कृष्ण के ही सर्वश्रेष्ठ रख करके भजन आदि करते हैं. They see Krishna is the highest and then they are. इसलिए निरपेक्ष आश्रम में अनेकों नियम के जो है पालन करना पड़ता है. They are worshipping Krishna. नियम के जैसे and you have to follow many rules. Like for example, wake up 4:30 a.m. for the Mangalarati and all the rules of the Shastra. निरपेक्ष साधु के लिए दिए गए. These rules are for the Nirapeksha sadhu. For the Grihastha, sometimes all these rules are not possible. Like to wake up early in the morning and all these things. Because they have to take care of their kids, isn't it? It takes time for doing that, isn't it? पहले मंगलारती पहले हरिनाम के पूरा. First you should chant holy names or go to Mangalarati. First chant your holy names, but not chanting until 7. Doesn't mean you have to chant until 7. जैसे मंदिर में 4:30 बजे करते हैं. For example, the Mangalarati is 4:30. वो आपके गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं होता है. But in the Grihastha ashram you cannot. कहाँ संभव हो? Wake up so early. Like also when we travel also I don't do also Mangalarati at 4:30. मंदिर में ठहरते हैं वो तो 4:30 बजे हो जाते हैं. In the temples yes, the Mangalarati okay is 4:30. 4:30 से जहाँ पर 5 बजे कर देते हैं. But generally I do 5 o'clock even because there are so many people in the festival. Take time for everybody to take a bath and be ready for the Mangalarati. So otherwise half will come, half will not come. Half will have taken bath before Mangalarati, half not. That's why not so early is not possible. So sometimes the rules, it's not breaking the rules, just like adapt the rule. Reduce. You can reduce the rules. There is no fault in doing that. नहीं तो कहे तो नहीं वही करना ही है. Otherwise no, I have to do it no matter what. So this is niyam agraha and niyam agraha. Niyamagraha. नियम में अग्रह नियम में आग्रह हो जाता है. नियम में आग्रह माने नियम छोड़ करके हम कुछ नहीं करेंगे. Niyamagraha is like I will not follow anything. करना ही पड़ेगा. I can't follow for 30. तुम उसके कान के सामने घंटी बजाओ. Then your husband maybe went to sleep very late, and then you're like ringing the bell on his ear. I have to do 4:30 Mangalarati because my Gurudev told like too much. I think I spoke on Niyamagraha, too much strong following the rules and regulations. तो संसार में थोड़ी ऐसे होता है. So the family cannot do that in the family house. घर संसार के गृहस्थ के लिए. So for the Grihasthas there is some. छूट नहीं है, हम छूट नहीं कर रहे हैं. Leave the rules. कहीं पर भी कहीं जी थोड़ा विधि के यदि थोड़ा आगे पीछे दोष नहीं लगते हैं. Little bit जैसे गीता में भगवान कर adapt the rules, there is no problem. Like Krishna told in the Bhagavad Gita, Neha Vikram Nashvasti. महतो भय. नेहा विक्रम नाशोस्ति. जो नियम आज दिया गया उसमें these rules that are given, if you the sequence or if of the rules not followed, or if you pratyavya means there's no fault. There will be no fault if you little bit यदि भक्ति के अंग पालन करने पर वो समस्त even if you follow a little bit the limbs of bhakti,
भगवान को प्राप्त You will be करेंगे। free from all the material fears and you will attain Bhagavan. This is local of the Bhagavad Gita. नियम को आपको But in the Tyagi ashram, when you renounce, then you have to follow all the rules. Yes. नियम को ही जो प्रायोरिटी देते हैं वो नियम आग्रह नहीं होते, नियम के जो नियम नहीं। को ही सब कुछ समझते हैं, मतलब इस टाइम पे ये करना है, नियम को तो करना ही पड़ेगा। So yeah, you have to follow the rules and कहाँ regulations. I'm talking ये about 3 प्रकार जी साधकों ने बताया, स्वनिष्ठ, the 3 kinds of sadhakas: Swanishta, Paranishta and निरपेक्ष। Nirapeksha. स्वनिष्ठ में तो वो तो चलेगा, वर्णाश्रम धर्म के पालन। In Swanishta, he's giving more emphasis in following Varnashram Dharma. Paranishta, he's following Varnashram but worshipping Vishnu. And Nirapeksha, they are following all the rules and regulations. तब तो गृहत्यागी होते हैं, उसके Nirapeksha is a renounced person. This is for them. नहीं तो मंदिर में यदि नियम के अनुसार Otherwise, if we don't follow all the rules in the temple, कैसे मानेंगे? then how other people will be able to follow if not even the temple people follow? आरती करना ही पड़ेगा। Like have to follow the Mangalat at 4:30 in the temple. ये है तो ये विधा है क्या पूछना? जैसे आपने कहा था ना आज कि हमें 1 लाख इनाम करना चाहिए, हाँ, तो भी जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक राउंड करने में। 16 माला I chant 16 rounds कथा सुबह 1.5 घंटे की होती है, फिर in 1.5 an hour, 2 hours. फिर शाम की 50 मिनट्स की, हाँ, फिर घर का काम, And also I have duties of my house, the time for उसके Harikatha. बाद भी क्वालिटी वाली करनी चाहिए। And also I should chant with quality or quantity the holy names. आपके क्वालिटी आपको होनी चाहिए, No, नाम you should की chant जो with है quality. क्वालिटी होनी चाहिए। You must have शुद्ध quality नाम in जैसे chanting. वो विधि के अनुसार होनी चाहिए, क्वांटिटी Chanting- के ऊपर नहीं। Don't give attention to the quantity but to the quality. देखो हम कहते हैं प्रयास करो, नहीं हो रहा Okay. तो कोई बात What नहीं I'm saying, you try to follow, but if you cannot, it's not a problem. It's okay. है, प्रयास करो। You try to follow what I'm saying. निर्जला व्रत के लिए आपको प्रयास करो, नहीं कर पाए तो पानी पी लो। Like you try to follow Nirjala. If you cannot, then you drink water. What is the problem? बात करें, हाँ? बात हरिनाम करते हुए सबके साथ रह रहे हैं, सारे दिन चुपचाप हरिनाम ही करती रहूंगी। घर संसार की तरफ कुछ नहीं। सब बोलते रहेंगे, अनिल चुप रहेंगे, बोलते रहो, मैं तो नहीं काम करूंगी। सबके साथ रह रहे हैं, सारे दिन चुपचाप हरिनाम ही करती रहूंगी। घर संसार की तरफ कुछ नहीं। सब बोलते रहेंगे, अनिल चुप रहेंगे, बोलते रहो, मैं तो नहीं काम करूंगी। अरे अपना कोई व्यक्तिगत जीवन के लेकर के तो आप चलेगा नहीं, वो आपने अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हैं? अपने आप को क्या So करना you have to पड़ेगा? adjust yourself. ऐसे कर सकते हैं ना बोलते हुए। आदि जैसे करो करो, क्या करोगे आप? तुम अगर गुरुदेव से बोलते हैं कि कुछ राउंड बोलते हुए कर सकते हैं, तो सारे राउंड के लिए ड्रिल ले लो। आम उसे नहीं जा रहे, सब कुछ अपने के विचार को लगाना, दिमाग लगा करके कर लो, तो उसमें दोस्त क्या लगेगा? तुम छोटे बच्चे के भांति बात करो तो हम कैसे बताएंगे आपको? So- ये करें, You're like a baby. How can I say? हैं? गिरिराज का स्वरूप बताया गया था, सख्य भाव। गुरुराज जी के सबका भाव है, हैं? कहते हैं सख्य भाव है बताया गया। कौन कहा जाता है? हर दस में सेवा करते हैं गिरिराज जी को। गुरुराज गोवर्धन सबका भाव नहीं, गुरुराज So गुरुदेव somebody कहते हैं। told Giriraj is in Sakya Bhav. The devotee told. Then Gurudev is saying गुरुदेव कहते थे गिरिराज that गोवर्धन Gurudeva जो है, used to say that Giriraj Govardhan is in Sakhi Bhav. Sakhi. उनका नाम भी बताया कोई मंदिर में। अरे कुछ मंजरी है, कौन मंजरी बताया? फालतू फालतू बात करते थे, कहाँ लिखा है मंजरी? They even told his name of Manjari. What Manjari? How many Manjaris do you know? You know the names of all the Manjaris. You are hearing a katha from anyone. Don't. जो है अभी सुनो, What is there? Just listen to me. You're not even doing bhajana for 4 years. After 50 years bhajan, then you tell me something. You're hearing from here and there. Do you know what is a Manjari? अभी जो बता रही हूँ वो सुनो। What I'm telling now, you listen to that now. आज समझो, Okay? विश्वनाथ चक्रवर्ती
वहाँ पर फिर सख शब्द का सखी शब्द में So Vishwanath Chakravarti told the word Sakha means actually means Sakhi. संस्कृत में जहाँ पर वो Because in Sanskrit Vishwanath Chakravarti wrote that Giriraj Govardhan is Sakha Bhava. But the meaning of Sakha Bhava in Sanskrit is actually Sakhi. समझ में आता है? Do you understand? Like Sakya. उसको समझना चाहिए. So you have to understand what Gurudev told. की बात लेकर चलो तो क्या होता है? Otherwise you're speaking here and there or listening here and there. हम थोड़ी सी बात सुनना है थोड़ी है. Do you think I listen to what they're saying here and there? अरे मान शांत रस में मान है, मान में कोई सेवा नहीं है. Shantarasa there is man there is no service. वो चुपचाप बैठ रहना. Like Srimati Radhika is sitting without speaking anything to Krishna. This is for his love also actually. अपराकृत चित जगत में ये भी सेवा है. Because in the transcendental world, आनंददायक है. आज समझिए उसी प्रकार आता है. शांत actually Krishna feels happiness when Srimati Radhika is feeling man. रस में क्या है? ममता है, ममता गंध है. संत रस में ममता नहीं रहता है. ममता नहीं रहती सेवा नहीं होती है. So in Shantaras there is no mamata, no possessiveness, so there is no service. So when Srimati Radhika is feeling angry with him, she's not giving him water to drink or anything. So when you feel man in your house, for example, you stay quiet, you don't cook anything for your husband, isn't it? तो इसी प्रकार जो है, so in this way, इसमें भी ये है, सेवा है. संतों में, संत रस में सेवा वृत्ति है. उसमें कृष्ण भगवान प्रसन्न रहता है. So Bhagavan is pleased. हाँ समझे. प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद गए शिष्य ताल में क्या बोला था? ताल में क्या बोला था? जब वो भक्त का वो पुष्ट होता है तो फिर तद आश्रय वृत्ति उत्पन्न. There is another person translating in English. Those who want to hear, तदाश्रय they are live in the another Facebook. तदाश्रय वृत्ति उनकी आश्रय लेकर के जो So tad ashray vritti. तदाश्रय वृत्ति कहा जाता है. Those bhavas that come when you take shelter, ashray. अनुगत्य में So सेवा आदि होती है. when you serve under the guidance of a specific sakhi, तद आश्रय. tad ashray vritti. उस सखी के अनुगत्य में So under the guidance of that sakhi, when you serve under her guidance, it's called tad ashray vritti. मतलब ये थोड़ा सा मुझे ना समझ नहीं आया कि ये वृत्ति जैसे वो जो सखी जिस भाव में सेवा कर रही है वही भाव बनाता है. किंतु उसमें भाव अनुसरण होता है, भाव अनुकरण नहीं होता है. So one thing is bhav एक विशेष भाव अनुकरण, anukaran, another thing is bhav anusaran. Anusaran is like follow under guidance, and anukaran is to imitate. So there is a difference. भाव अनुकरण होता है. भाव So we have to do bhav anusaran, like follow under the guidance. So the meaning of tad ashray vritti is you take shelter of her vritti and you serve under her guidance. This is called tad ashray vritti. ये सब विचार. मतलब आश्रय वृत्ति का अर्थ ये हो गया जो हमारे ऊपर है उन्हीं का आश्रय लेकर जो वृत्ति आई. हमारे ऊपर की बात नहीं आता है. उनकी अनुगत्य. आश्रय शब्द के अर्थ होता है, आश्रय means नीचे की बात है, उनकी अनुगत्य में होता है. Under her guidance. आश्रय शब्द के अर्थ होता है आश्रय means अनुगत्य. जैसे कहते हैं under their guidance. भजे तारे कृष्ण नहीं. There is another English translation going on from Anuradha Didi, which is there with Gurudeva. The link is in Jai Gurudev WhatsApp. Those who want can also hear, or better to I don't know. I will continue also, but those who want can go. It's okay. It's very good. आपके आश्रय में रह रहा हूँ.
अंडर गाइडेंस। So I'm staying in your like ashray. Ashray means under guidance. Whatever you do, I will follow. निर्देश दोगे, आपके निर्देश में मैं वो काम करूँगा, करूँगा। So I will do everything according to your guidance. उसी और क्या था बताओ? अरे नियम नियम आग्रह। नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या कहता है? What is niyam agrah? नियम आग्रह। And niyam agrah. केवल मात्र like one has strong A in the beginning, another आग्रह no. कहा जाता है। So niyam agrah is like if you're only following all the rules so much, like oh I'm following the rules. से हमें हर रोज मैं गंगा स्नान करूँगा। Like today, from today on, I will every day I will bathe in the Ganges. I can be sick, I have fever, no problem. भी आ जाए किंतु मुझे गंगा स्नान करना है। Even if Uttam Bhagavata comes, I have to take bath in the Ganga. Then maybe this will make an offense, बाधक हो जाता है, or maybe an obstacle to your spiritual life. So this niyam agraha, too much following the rules and regulations. But niyam agraha is like you're too much relaxed and not following properly the rules and regulations, like neglecting the rules. और नियम आग्रह। So you should not do any of both, too much or also not too less. बनाना और एक तरह से तोड़ देना उसे। एक नियम बनाया कि रोज गंगा स्नान करेंगे, फिर उसको पालन नहीं करना। नहीं पालन नहीं करना है। Okay. आप इतने समय तक क्या सुना फिर? What did you listen to all this time? Because she. जो कोई जैसे मैंने कहा किसी ने देखो example I told बनाया, somebody just create some rule, some vow. Okay, every day I must bathe in the Ganges. So this niyam agraha, no? Because like the strong rule, no? Even if anything happens, like I am fever or anything, I need to bathe in the Ganges. This is called niyam agraha. Agraha. So I think this is a strong, agraha. I think. सोचने लगे नियम मुझे गंगा स्नान करना है। Okay. उसमें गुरु आ जाए, भगवान आ जाए। So I have to bathe in the Ganga, and even if Guru is here or Krishna is here, I don't care. I need to bathe in the Ganges every day. नियम की जो प्राधान्य दिया है। So you're giving more emphasis to the rules itself. This is called नियम आग्रह। niyam agraha. आग्रह क्या है? And niyam agraha नहीं करना। soft A, not strong A. उसके शिथिल कर देना, So- उसके उदासीन रहना। You like also to maybe be lazy to follow the rules or neglectful. Like for example, sometimes you go Mangalarati, sometimes not. तो ये क्या होता है? This is niyam आग्रह हो जाता है। agraha. Like you're not having. नियम आग्रह होनी नहीं चाहिए। So it's not too much attached to the rules and also not too neglectful. नियम के ठीक से पालन करना। So I have to follow properly the rules. That's it. अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह। नियम में आपको पालन करना। So we have to follow the rules. विशेष काल विशेष में नियम के भी And in special circumstances, you have to समय देख करके विचार करके करना पड़ता है। think about it properly how to adapt that rule in that specific moment. अपना नियम छोड़ के दूसरा भी कुछ कर सकते हैं ना। उस समय के छोड़ कर दूसरी समय जाओ, स्नान करके आओ। Like you can bathe in another moment. You can go to the Ganges like lunchtime. Like if you have. क्या? आपने बोला चाहे दोपहर को जाओ। करो ठीक है। Yeah, if you have the vow to bathe every day, okay, you bathe. गुरु सेवा की प्रधानता को लेके But you're saying, oh, what if we have the Guru Seva or something? उसमें तो क्या नहीं कर रहे। Yeah, no, this is another thing. आग्रह नियम में आग्रह। So niyam agraha and niyam agraha. और क्या बताओ, जल्दी बताओ। What else? Tell quickly what do you want? अरे दूसरा बोला तो बोल क्या बोलेगे, दूसरा तो सुना नहीं तो चैतन्य तो पढ़ लो। You were not able to listen to. So here, so read the Chaitanya Charitamrita. क्या? वो साधु वाली, वो तो सुन ली थी थोड़ी सी, लेकिन वो साधु क्या? वो जो एक बार कपड़ा फेंकती है और वो साधु जो है उसका वो कर लेते हैं। हाँ। वो वाली तो सुन ली थी, मतलब वो भी इसलिए कि बाकी बड़ी समझ ही नहीं आ रही। समझ में कहाँ पर नहीं है? She couldn't understand that आवाज rest. खराब कर दिया तूने। The story, the sound was not proper. I think because today in the morning class there was a problem in the Facebook. I think हाँ। Sudesh Gurudev was telling. गुरुदेव वो जो एक साधु आता है भिक्षा मांगने के लिए, वो जो स्त्री है वो ओ अच्छा, वो कथा सुना। वो सुन ली थी, मतलब बाकी नहीं सुनी आवाज। तो बाकी क्या बोला, मैं तो थोड़ा याद करके तारीफ। I don't even remember what I was talking at that moment. I was telling that moment. विपिन कुसुम बिंदे वाला। हैं? विपिन कुसुम बिंदे वाला।
ये श्लोक किसमें है, कौन से ग्रंथ? कौन सा? समस्त सखियां जो बताया था कि सेवाओं में सुदक्ष हैं। All the sakhis are expert in the service. You're explaining, Gurudev, like about ये तो मनो शिक्षा making में the था। garland. That verse is हाँ, quoted in the इसी Mana श्लोक से तो Shiksha. बताया था नहीं? So they always talk. Yeah? They are asking about the morning class, some things they didn't understand, and then Gurudev is saying, "Oh, I was reading the shloka from Mana Shiksha. The shlokas I quoted, they were on Mana Shiksha." ये राधिका अष्टक में है ना? Where is the shloka Vivida Kusuma Vrindotpula? The shloka is in the Radhika Ashtaka composed by Rupa Goswami. Gurudev is saying. राधिका तुम्हें अरे कुमकुमाप तो कांचमाजू Kumkumapcha, this another shloka is also from. वो तो इसके श्लोक है क्या बोले? Ashla is from Krishnadas. कृष्णदास कविराज की कृष्णदास कविराज गोस्वामी, his Radhika Ashtakam. जो गर्वहारी गौरव वो है। और इसके जो श्लोक जो है And these are the तो shloka. बोले हाँ अच्छा हरे कृष्ण आरती शुरू हो गई नहीं? Has the arti begun? हाँ ये बताया। अच्छा वो तो श्लोक है विविध कुसुम बिंदु धम्मिल धाटी है। गीति गुच्छ तो रखते नहीं हो घर में? This shloka, you don't have the Gita Gocha in your. गीति गुच्छ कहाँ है? Where is the Gita Gocha? Because this shloka is in the Gita Gocha. उसमें है। हाँ उसमें देखो You can see. 4-5 नंबर से I think the 5th shloka of the Radhika Astakam. हाँ विश्वदम कुन्नुगुल्ली धम्मलधाड़ी विगुदमर्द गुण के पंच प्रशस्तिम है मधुर बिंबुद गुण तम्मुल राग स्फुरतमुल कपलंग राधिका अर्चयाम वही है। Yes, that's it. इसमें है ना राधिका कहाँ गए हो? ये है विविध कुसुम विधिमा कुसुम बिंदु धम्मिल धाड़ी विविध मधुगुण के ऐश लगा। 5th नंबर ना, 4th नंबर है। हाँ कुछ अध्ययन करो अच्छा लगेगा। If you study something, it will be good. कुछ श्लोक का अध्ययन कर लो And memorize, read some shlokas, read them, study them, it will be good. It will be good. पढ़ते हो कि नहीं? Are you reading and studying or ये not? एकादश करनी इसमें तो भक्तिमान ठाकुर लिखा है। This is written by Bhaktivinoda Thakur. सज्जा सजाना जल लाना मालहारा माला गुथना तामुल की बीड़ी प्रस्तुत करना ये सब भक्तिमान ठाकुर ने लिखा गया। Bhaktivinoda Thakur has written this. भजन दर्पण दिग्दर्शन वृत्ति Commentary of Mana Shiksha. आपने बोला था कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी की सेवा फिक्स है एक So you told that the seva of Bhaktivinoda Thakur is fixed. सेवाएं मैं सोच सकते हैं सब प्रकार सेवा But he's also expert in other services. सभी So there's one main service, right? Yeah. So each sakya has a specific service. और बाकी सेवा भी उनके लिए रहता है। And सबने सुदक्ष है। but they are experts in all the services also. ये क्या है? हाँ ये तो विविध कुसुम बिंदु फुल्ल धम्मिल धाटी विगृत मधुगुर्ण के पिंची प्रशस्ति मधुर मुख बिंबोदिगन्न तम्मुल राग स्फुरतमल कुपलम राधिका मैं उन श्रीमती राधिका की पूजा करता हूँ I worship जो Srimati अनेक Radhika, प्रकार पुष्पों से सुशोभित अपने केश पास से बलपूर्वक who is आक्रमण के ornamented द्वारा with many flowers. मधुमाते मयूर के पंखों को प्रशंसा को ही तिरस्कृत करने वाले हैं
एवं जिनके निर्मल कपोल श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हैं और तामुल रस की ललिता से स्फूर्ति पा रहे हैं, लालिमा से स्फूर्ति पा रहे हैं। अच्छा है। This is Radhikastakam Gurudev is reading. इसके तो बोलने के मैं जैसे बोला ऐसे नहीं लिखा गया। So, but what the explanation I give, it's not here, but yeah, this is also here. I'm not differently, but I expand what is written here. मैंने भाव को प्रस्फुटित करना है ना। I present the bhav inside this. अनेक प्रकार के पुष्प से सुधित केश कलाप बलपूर्वक आक्रमण के द्वारा मदमाते मयूर के पंखों के प्रशंसा के तिरस्कृत करने वाला है एवं जिनके निर्मल कपोल श्री कृष्ण के मुखारविंद से Let me see this verse. निकले हुए तामुल रस की लालिमा से स्फूर्ति पा रहे हैं। क्या ये हिंदी बहुत कठिन हिंदी है। This is a difficult Hindi. So this is the Radhikastakam by Rupa Goswami, verse 4. I worship that Srimati Radhika whose braided hair, beautifully adorned with clusters of many varieties of fully blossomed flowers, forcibly attacks and reproaches the fame of the tail feathers of an intoxicated dancing peacock, whose pure unblemished cheeks are reddish and very lustrous from the juice of the tambula remnants from Madhupuri Shri Krishna's bimba fruit lips. Gurudev is saying that imagination is a tendency of the mind. To imagine is a tendency of the mind. We think about so many things in our mind. What is the mind? What is the mind? The mind thinks good things and bad things. This is the mind. This is mind. So this imagination, the tendency of the mind is imagination, but anubhuti, realization, is performing bhajan slowly. Then by the mercy of Guru and Bhagavan, you will feel this realization, this feeling, anubhav. This is a transcendental thing. Transcendental. So the imagination is like, oh, like a dream. You think, sometimes do you dream? Do you have dreams? It's like, oh, actually, the dream is what are you thinking about during the day. During the night, this comes into your unconscious mind. We have two kinds of mind. One's Chetan, conscious mind, and Abhachetan, unconscious mind. Abhachetan. Conscious being and conscious mind and unconscious mind. Conscious mind or unconscious mind. वो उसी प्रकार से शटल होकर के वो आता रहता है। वो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कोई किसी के टांग, किसी के पैर, किसी के head. And also, it makes no sense. Like in your dream, maybe you're mixing like someone's head with someone's leg. मन के जो है, like you're mixing elements of things. चिंतन आदि होता है, वो स्थिर नहीं है। इसलिए अनुभूति जो है वो But anubhuti, realization, is like chanting her name slowly, then you attain realization. जब नाम करोगे तब अनुभूति So when you chant her names, then you achieve realization. But those who are not chanting her names, they cannot achieve realization. नहीं, कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं। Like you can imagine anything, right? The imagination, like you can just leave it to your mind and your mind will imagine many things by itself. And sometimes you write down, oh, this happened, that happened. Like the best poets, they are actually writing their imaginations, what they can think about. And they use many nice words to describe with beautiful ornaments, like they can write very well whatever they imagine. They have very good imagination, like the writers and novelists. And yes. Anubhuti, realization, is chanting holy names slowly. The more you chant, by the influence of the holy names, you will achieve realization. But if you are not chanting, you cannot attain realization. Not possible. So to realize transcendental things, you must chant holy names. For material things, then you feel material things, because anubhuti means also like realization. Is feeling also. Feeling. So they also use, for example, feel hot, feel cold. You know, there's a feeling also. So
वो करके अनुभूति होता है। We feel things with our material body and gross body. This is called jara anubhuti. Anubhuti is when we translate as realization in English. In Hindi they say anubhuti, feeling. अनुभूति भी दो प्रकार बता रहे हैं। So two kinds of anubhuti, and also like jara anubhuti is material feeling, like. So there are two kinds of anubhuti, realization, material things and spiritual things. You can realize or feel material things, means feeling hot, cold, but to realize spiritual things, you have to chant holy names for that. So everybody feels material realizations, because realization means feeling, okay? So everybody has feeling, material feelings, like feeling cold, feeling hot. This is feeling, you know, experience you feel like practical in you. So the mind is not completely material and also not completely conscious. But the mind is considered as a material thing, jara. जड़ के अंदर में लिया जाता है। Is also considered material, because one thing is jara, material, and chetan is spiritual or conscious. So तथापि उसके जो हम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो जड़ और चेतन के मध्यवर्ती ले रहे हैं, जैसे एक so just like for example, ईंट के द्वार अपने लगे, उसमें imagine a brick, a wall made of bricks. You cannot see the other side. But if it's a wall made of glass, then you can see in the other side what is there, right? तो दोनों जड़ तो ये ईंट के दीवार जो है, so this wall made of bricks is material, and the glass is also material. But in the glass, you can see what is in the other side. So in the same way, although the mind is jada means material, it looks like a semblance, looks like chetan, conscious is there in the mind, looks like. But actually there is no purna chetan, complete consciousness. So actually only when the gross body and subtle body are destroyed, then there is the complete consciousness. The swarupa of the soul, the atma, swarup will manifest. But having the some plans of consciousness, not जब शरीर छोड़ देते हैं पंचभौतिक, तो बोला जाता है कि मन बुद्धि अहंकार चित्त अगले शरीर में उसमें चले जाते हैं। आत्मा जो है, आत्मा कहाँ पर रहती है? So where is the soul? Where does the soul stay? स्थूल शरीर के अंदर में जो है, the soul is inside the शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहती है, subtle body, and the subtle body is inside the gross body, and then the soul goes to other bodies, स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, attain other gross bodies, then we leave the body and etc. So the sukshma sharir means the subtle body and gross body, when both are destroyed, then the atma sharir, the body of the soul, will manifest. Do you understand? So I'm speaking, but it's not easy to understand these topics. So that's why listening slowly, by the mercy of the Guru Bhagavan, then you attain realization. This is called Chit Anubhuti. Chit Anubhuti, like spiritual realization, spiritual feeling. So in this world we have Jara Anubhuti, material realizations or feelings, like we feel hot, cold, etc. But Chit Anubhuti is spiritual realization. If we don't have Chit Anubhuti realization, then we are going to material things. Chit means transcendental, feeling, realization. So our samskaras go to the next birth? Yes, because they go with the subtle body. So whatever you're doing bad and good things, good and bad things, these samskaras, these impressions are going with your subtle body to your next body. So according to the karmas from previous lives, these are coming. Like happiness, sufferings, whatever you did, they are coming back. What to do? So it's easy to give up the gross body, but not the subtle body. Gurudev is saying it's not easy to give up the gross body. Actually, you don't want to leave the gross body as well. आत्मा की भी उसी प्रकार भी अपराकृत उनकी जो है अहंकार होता है. The soul has an aprakrita ahankar, transcendental ego. तुम एक प्रश्न करो फिर दूसरा प्रश्न. You're asking one question then another question. जैसे अभी हमारे ये कार्य है. So now for example, मन है. The soul also has a mind. आत्मा की भी आँख है. They also has आत्मा की eyes. सब कुछ है. वो वहाँ everything. पर सब
अपरागित दिव्य कहा but it's all transcendental and divine. आत्मा शरीर जिसको कहा जाता है, जैसे हमें Atma Sharir. दिख रहे हैं, Just like we see the gross body, in the same way, the soul has a body as well. It's called Dibya Alokik, divine and supramundane transcendental body. So all these activities of the soul are happening with this इसलिए कहता है वो body. अपरागित तत्व है, वो हमारी बुद्धि के क्या परे, and they're completely beyond our intelligence grasp, the grasp of our intelligence. जड़ विचार के द्वारा हम With material mind, material intelligence, we cannot समझ नहीं पाए. understand this body of the soul. इसलिए तो शास्त्र में कहा गया, That's why the Shastra explains that अपरागित वस्तु जो है, transcendental उसके things, प्राकृत इंद्र के द्वारा हम समझ we नहीं cannot understand them with material senses. है, वो उसके करने के लिए यही तो भजन प्रणाली है. That's why we have to perform bhajan. This is the way we perform bhajan. So we speak in the way we always come back to the only one word, one thing only. Chant holy names, because by chanting the holy names you'll be able to understand. Holy names is sadhana, process and goal, sadhana. The more you chant, everything depends on the more you chant. The more you chant in a pure way, the more you'll be able to attain pure realizations, pure feelings, realizations about God. So if you're not chanting in a pure way, then you don't have realization. We want to have here realization. So what I'm saying, that what the Shastra is saying, it's this. So the more you chant holy names, Gurudev Gokulachana Prabhu told in the class that the pastimes of I didn't understand. He said that all the leelas of Krishna in this material world are eternal also. How is this? She also told some other things, but I couldn't listen. Sorry. I couldn't hear. So what happens? सभी ब्रह्मांड एक समय लय हो जाता है. Actually, लय होने पर भी जिसे कहता है आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है. Atyantic Pralaya is the time of all where all the universe are destroyed. कुछ भी नष्ट होने पर भी In the Atyantic Pralaya, everything is destroyed, but Shesh remains. उस समय भगवान क्या करते हैं? So what does Bhagavan do? With his Achintya Shakti, inconceivable potency, Bhagavan continues manifesting his pastimes. Because the leelas of Bhagavan are eternal, yes. अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा So if his inconceivable potency, Bhagavan continues his pastimes, even in the time of the destruction of the universes. अपने जोग माया के द्वारा रचित करते रहते हैं, उसमें लीला आदि करते रहते हैं. He creates like an universe with his Yoga Maya and performs his leela at that moment also. नहीं, वो लीला आदि नित्य होने के समय, उस समय भगवान क्या करते हैं? So what God does at the moment? स्वरूप को तो उस समस्त जीवों की प्रकाश करते हैं. He manifests the jivas from his swarupa and performs the pastime. क्योंकि भगवान की जिद्दी का जो सब ये हो गया, सब otherwise you say, oh, in the Atyantic Pralaya moment, all the universes are destroyed. All the universes will be destroyed at that moment, right? So, the Leela of God in this material world, how it will take place in that moment? So, in this context, it is described that Bhagavan in that moment, what does he do? With his inconceivable potency, he prepares another universe. And in this universe, he is performing pastimes in this universe. And the Jivas, they are not conditioned souls. With his Chit Shakti, then Bhagavan fills that universe with jivas. It's amazing leelas take place at that moment. Unprecedented pastimes. Otherwise the leelas of God wouldn't be eternal. Yes. So the leelas are in any universe, they are taking place in always. In one of the universe. The leelas are always going on, like this Loka explains. The leelas are not destroyed, never, ever. So this is how to reconcile. Okay, we heard, you speak, we heard, you heard, but how to understand? They know. I mean, Krishna knows. जहाज का मूल्य क्या है, जहाज में क्या लेकर के क्या करोगे? हैं? क्या बोला? अदरक भाई बेचते हैं ना, 5 Those who sell ginger, बेचने वाले. He's selling the ginger for 5 rupees 1 kilo. So what the ginger seller knows about the price of a ship with full of many expensive goods, you know?
So what do we know about this, you know? भगवान So yes, Bhagavan with his Yogamaya, he prepares this universe and performs that Leela in this moment also of the destruction of the universes. Then this Leela disappears, becomes invisible, and then by the desire of Bhagavan, Karanada Kashai, Garbhoda Kashai, Kiroda Kashai, Vishnu, and like Maya, then everything continues. Do you understand? ज़्यादा ब्रेन के ज़्यादा मत ही करो, उतना ही तक रखो से. Just try to understand this. Don't force your brain. You know that shloka Sata Janmaiki that says that only those who worship Vasudeva for 100 lives they can chant holy names. Sata Janmi जो अपमान वासुदेव समर्चे तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भार. ये भजन रस में श्लोक है था. This shloka from the Bhajana Rahasya. प्रथम अध्याय में. इसमें एक वो था कि उसने बोला कि 100 जन्म मतलब 100 जन्म तक वासुदेव भगवान की सेवा करें. तो इसका मतलब 100 जन्म तक मनुष्य योनि प्राप्त हुई. For 100 lives. So as a human being, right? मनुष्य करते थे, पशु थोड़ी करता है. Yes, of course. Do you think animals could worship Vasudeva Bhagavan for 100 lives? बीत चुके हैं. So it means I already had birth as 100 lives as human being. तो ये आपका पहला है कि कौन से? But today is your first life or which life of you? How to know? Because this book explains 100 lives worshipping Bhagavan, then you can chant holy names. So Gurudev is asking, are you in your first life or which life as a human being chanting, worshipping Vasudeva then? जो जीव 100 जन्म वर्णाश्रम. So those jivas for 100 lives have followed properly the Varnashram Dharma. They attain the position of Brahma. The point that Didi mentioned. अरे जो बोला है जो वासुदेव भगवान के अर्चन कर रहे हैं. So Vasudeva Bhagavan, those who worship Vasudeva Bhagavan for 100 lives. भगवान विष्णु के आश्रम पालन कर. भगवान की 100 जन्म जो मानो वासुदेव समर्चे 100 जन्म ऐसे किया वासुदेव भगवान के. For 100 lives they have worshipped भगवान के नाम Vasudeva. They can chant holy names. नाम की महिमा. ये नाम कौन उच्चारण करे? सबके मुख में नाम थोड़ी उच्चारण होता है. Not everybody will be able to chant holy names. बहुत लोग नाम क्यों नहीं करते? Why so many people don't chant? This is the reason. अच्छा चलो आरती में चलते हैं. Let's go to the Arati. Let's go to Arati. जो सुन तो वो तब भी सुनना पड़ेगा ना. ऊपर भी बैठे रहते हैं. ऊपर सुनाई वो सब. अरे रिकॉर्डिंग जो करी उससे सुन लिया करो ना. Okay, go. नहीं श्लोक बताया था ना आपने भगवान को याद करो पंछी लोग आपका होता है. Jai Gurudev.